Students, I am from Kanungu Economics. In my last video, I have explained you about the difference between economy and economics. That was no doubt a very valuable basic economic concept. But I could not find any more comments from all of you. So I think that you have gone through the topic very well. Now, I want to explain you what is scarcity and choice. This is also a very important basic economic concept and which frequently come to it in your examination. You see, economics is a subject which studies scarcity and choice. ଅର୍ଥନୀତି ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ଯେ କି ସ୍ୱଳ୍ପତା ଏବଂ ଚୟନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ. So naturally the question arises, what is scarcity and what is choice? ସ୍ୱଳ୍ପତା କ'ଣ ଏବଂ choice বা চয়ন କ'ଣ? You see, scarcity refers to shortage of supply in relation to our demand. অর্থাৎ স্বল্পতা কহিলে চাহিদা তুলনারে যদি যোগাণ স্বল্প হেলা ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଆସେ. That means very conveniently we can discuss that scarcity refers to the shortage of supply. Whenever a commodity is less supply in relation to our demand, that means ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାହିଦା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ availability of the commodity বা ମାର୍କେଟରେ ଜିନିଷଟା କମ୍ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି. Let us give an example. Suppose in a market the people are demanding 1 quintal of rice, but the availability of the market is only 50 kg. In this sense, the supply of rice is scarce. So symbolically I have mentioned, you see, supply is less than demand, S is less than demand, but jogano chahida tharu kam. When the supply of a good or services is less than its demand, its value increases. Another important line, you see, whenever the supply of a commodity is less than its demand, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ତାର ଚାହିଦା ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ. You see, when the supply of a commodity is less than its demand, its value rises. This means that your demand of the market is 1 quintal of rice, but supply is only 50 kg. Let us think that the price of the rice is 30 rupees per kg. And when your demand is 100 kg, but your supply is 50 kg, at this time the price may be increased from 30 to 40 or 50, or it may be also be 60. So whenever the supply is less than demand, ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, its value rises or ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ. Therefore the consumer has to pay price to get the same. ତେଣୁ ଉପଭୋକ୍ତାକୁ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ. You see, in our nature there are several commodities are there whose supply is abundant than its demand,
यार जुगाण प्रचुर अच्छी यार चाहिदा तुलना रे बट दे आर वैल्यूएबल इन आवर लाइफ वी कैन नॉट लिव वी कैन नॉट एग्जिस्ट इवन वन मोमेंट विदाउट द एयर विदाउट वाटर और सनशाइन but you see because the supply of air the supply of sunshine the supply of water is greater than its demand though these are our very valuable commodities these are the source of our life these are the source of our existence we have not to pay any price to them जदिओ से माने आम बंचिबार माध्यम जदिओ से छाड़ीदे आम बंची पारू ना किंतु से जोगाण आमर चाहिदा तुलन में बेसी हवा जोगु आमे तांकु किछि पैसा दबाकू पड़े नाही बट यू सी इन आवर इकोनॉमी मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेस आर स्केर्स किंतु आम अर्थनीति रे आम देश रे आम पृथ्वी रे अधिकांश द्रव्यर जोगाण चाहिदा ठारू कम मेजॉरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस आर स्केर्स you cannot get ample goods and services according to your demand तुमर चाहिदा तुलन में तुम्हें प्रचुर परिमाण रे द्रव्य पाई पारिबो नाही अधिकांश द्रव्यर suppose you want to get a good teacher even if you want to pay price you cannot get it immediately because the supply of the efficiency of the teacher जेहेतु शिक्षकर एफिशिएंसी बा दक्षता बहुत यार जोगाण कम तेणु आम या पाई पारुनु जदिओ पाउचु या पैसा दबाको पड़ुची ऑब्वियसली द स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमाइंड दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन obviously scarcity is the root of all economic problems समस्त अर्थनैतिक समस्यार गोटे मूल भित्ति है अर्थनैतिक समस्या समस्त स्केर्सिटी बा समस्त स्वल्पतार मूल भित्ति है अर्थनैतिक समस्या बिकॉज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर स्केर्स इन रिलेशन टू आवर डिमांड दे आर फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस जेहेतु चाहिदा तुलन में जोगाणर स्वल्पता रोची तेणु अर्थनैतिक समस्या उपजुची इट्स ए वेरी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट यू सी इट्स ए लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस ऑफ मैन स्केर्सिटी इज आवर लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस इट इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी ऑलवेज फेस स्केर्सिटी we always face unlimited wants and limited resources therefore I wrote it it's a lifelong companions of man जेहेतु असीम अभाव तुलन में संबलर स्वल्पता रही तेणु अर्थनैतिक समस्या उपजुची एवं यह आमर जीवन सारार बंधु होइकी रहुची It's a lifelong companions. It was a problem of yesterday. It is the problem of today and it will remain as the problem of tomorrow. Next, please switch over to your choice. What do you mean by choice? That is also a very important thing. You see, choice. उड़िया रे जहाँ को कहा जाए चयन पसंद बोली आम जहाँ को कहूँ टू चूज और सिलेक्ट एमंग डिफरेंट कंपीटिंग एजेंट्स इज नोन एज चॉइस विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता मूलक अभाव मानक मध्यरु जन को चूज करिबा बा जन को पसंद करिबाटा हला चॉइस बा पसंद बोली कहा जाए यू सी इन आवर लाइफ wants are unlimited the wants are competitive because of our limited resources therefore we have to choose
which want we will select को अभावटा को आम आगे पूरण करूँ जेहेतु असीम अभाव रोची सीमित संबल रोची दैट मीन्स दिस स्कार्स रिसोर्सेस कंपेल्स यू स्वल्प संबल तुमको बाध्य करुच्ची अभाव मानक मध्यरे चूज कर चॉइस कर बा पसंद कर को अभावटा को तुम आगे पूरण कर because the squares resources have alternative use choice is the outcome. You see this is a very important line and it frequently comes in your examination because the scarce resources have alternative uses. Scarce resources can be alternatively used. With the 10 rupees of note you can purchase a ballpoint pen, you can purchase a khata or you can take a tiffin. If you have 30 rupees, you can fill up. There will be no question of choice. But because the limited resources you have, therefore you are forced to choose among ballpoint pen, khata and tiffin. So naturally you see because of the scarce resources have alternative uses, choices is the outcome. तेणु सीमित संबल जोगु ही सीमित संबल फलाफल है चॉइस और चॉइस इज द आउटकम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस और स्केर्स रिसोर्सेस. On the other hand, we face unlimited wants and on the other we have scarce resources. I have told you again and again, because of unlimited wants and scarce resources, we are to make choice. असीम अभाव सीमित संबल पाई आमको कौन करने को पड़ुची आमको सबु बेले चॉइस बा चयनर आश्रय नबाकू पड़ुची. मिल्टन फ्रीडमैन once told, if we have unlimited resources, if we have unlimited wants and unlimited resources, there would have been no economic problems. But it is not the fact. It's not the reality. We are facing unlimited wants and limited resources. Therefore, we have to make choice. तेणु आमको चॉइस करने को पड़ुची. जेहेतु मिल्टन फ्रीडमैन कहिले जदि असीम अभाव तुलन में असीम संबल था ताहाले अर्थनैतिक समस्या उपजु न था बा आमको चयन बा चॉइस करने को पड़ू न था. किंतु वास्तव में द प्रॉब्लम इज डिफरेंट. वास्तव में समस्याटा अलग. आम पाखरे असीम अभाव सीमित संबल तेणु आमको चूज करने को पड़ुची चॉइस करने को पड़ुची प्रिफरेंस करने को पड़ुची सिलेक्ट करने को पड़ुची. Then you see, under this conflicting situation, choices is the only way. ए प्रकार एक द्वंद्वात्मक परिस्थिति रे चयन ही एकमात्र रास्ता. Otherwise we cannot live. We cannot live peacefully because of this under this conflicting situation. ए प्रकार द्वंद्वात्मक परिस्थिति रे गोटे पटे असीम अभाव रोची गोटे पटे सीमित संबल रोची. तेणु चॉइस इज द ओनली वे. चयन है गोटे मात्र रास्ता. बिकॉज ऑफ प्रिफरेंस ए कंज्यूमर इज एबल टू सिलेक्ट सम वांट्स एंड लीव द रेस्ट. यही पसंद पाई उपभोक्ता कौन करुची ना उपभोक्ता किछि को चूज करुची किछि को पसंद करुची आउ किछि को त्याग करुची स्थगित रखुची बा पोस्टपोन करुची. यू सी बिकॉज ऑफ प्रिफरेंस ए पसंद पाई कंज्यूमर इज एबल टू सिलेक्ट. कंज्यूमर सक्षम होउची ताकू सिलेक्ट करिवा पाई ताकू पसंद करिवा पाई. एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच फल रे ही लीव्स सम वांट केतेक वांट को ताको परित्याग करने को पड़ुची आउ केतेक वांट को चूज करने को पड़ुची बा चॉइस करने को पड़ुची. एंड माय लास्ट लाइन
Therefore, fundamental problems of human life is choice making or decision making. So the fundamental problems of human life, मनीषर जीवनर मौलिक समस्या हला he has to make choice making or decision making, ताको निष्पत्ति नबाको पड़े. Thank you all. Wait for my next video, and in which I shall explain you another valuable topic which will be very much helpful for your examination. Thank you all.